Good afternoon, everyone. Welcome back. Today we are going to do the chapter on sequences and series, and in that we are going to talk about arithmetic progression. Okay. Ravi sir, would you like to add something? Please continue. I will join after some time. Okay, sir. Okay. Yes. So, a very good afternoon. Yes, Kaushal, Mehfooz, a very good afternoon. So, as told last time, permutation, combination, sequences, and series, sets, and differential integration, they will together constitute part 3. And in that, 30 to 50% marks are for those chapters. And what we are going to study in this is about, yes, Rajveer. So, we are talking about sequences. In that, we are going to today talk about arithmetic progression. We are going to talk about sum of n terms, what is the first term, what is the common difference, and then we are going to talk about sum of n terms. Okay, then there is special series, sum of first n terms, like 1, 2, 3, 4, sum of squares of the first n terms, that is 1 square, 2 plus 2 square plus 3 square, sum of the cubes, 1 cube, 2 cube, 3 cube, okay, that way. And then geometric progression we're going to take next time, and it will be similar to this. We'll have tn, so nth term, then we will also have what is the ratio, then we'll have what is the sum of the series, and what are the common applications of these in finance we are going to do next time. Now, let me start with an example. Suppose your school is 10 kilometers away from your home. So, like when going to school, you're very, like you've got up just then, and so you're walking very slowly and you're going, cycling at 30 kilometers per hour. Okay. But on the way back, you are in a hurry to come home, you're recharged in school, and while coming back, you are coming back at the rate of 60 kilometers per hour. Okay. Now, can anybody tell me how much time will I need to go to school, home to school? How much time will I need? And from school to home, how much time will I need? Those on YouTube also, welcome. Okay. So, home to school, yes, Akshat, you can put it in the BS portal. So, I need 20 minutes, and coming back, I'll need 10 minutes. Yes, very good. So, total 30 minutes. And how many kilometers have I traveled? 20 kilometers. Okay. Now, if I take the simple arithmetic mean, what will happen? I will take the rate of 30 kilometers while going and 60 kilometers while coming. I'll get an answer of 45 kilometers per hour. But this does not tell us the correct average speed for the whole trip. Then geometric mean, if I take, it is giving you square root of the two rates, okay, 30 and 60. It gives me 42.43. So geometric mean will be more balanced in terms of when I'm comparing with the arithmetic mean, but still it is not very accurate. Then we talk about the harmonic mean. So in harmonic mean, what happens is I find it 40 kilometers per hour. Now see, 20 kilometers in 30 minutes is also giving me 40 kilometers per hour.
So HM is used when you want the average in situations where time spent is more important than distance while calculating speed for the whole trip. So where do I use arithmetic progression, arithmetic sequences, arithmetic series is when I want to have a general idea. Okay, I have a set of data and I want to just know in general what the trend is. That time I'm using my arithmetic mean. Geometric mean is when the ratios of the numbers is important, like when you're investing, so when there is compounding effect, when there is that ratio effect, so that time a geometric mean is used. And harmonic mean, though it is more difficult to calculate, it is going to give you the more accurate answers. Okay, so this is all about the general what we are going to talk about. So AM is simply the average of two numbers. Geometric mean is giving more accurate middle values, and HM is more useful while calculating average of ratios or rates like speed, work done, as it properly balances the time spent at different speeds. Okay. Now, I would like you to know that you, as far as possible, know your tables of prime numbers. Okay. And this is especially for 11, 13, 17, 19, 23. Okay, you just need to know. So that what happens is when you see the number, okay, it's there, you have a calculator, but still it is better if you know these, so that just looking at the options, you will be able to sometimes, get the answers just by looking at the options. And then this also. This is you'll require in geometric mean also, but I'm already telling you here itself, so that for 2, 3, 4, 5, if you could just do this, so that you will, if you say to 1024, you already know it is 2 raised to 10. Okay, so that way you will be able to do it. Now coming to what is a sequence and what is a series. Now suppose you're considering this 1, 2, 3, 4, 5. Okay, and so you can see the difference is 1. Difference is 1. So that 1 plus 1 is 2. 2 plus 1 is 3. But let us see here. 14 to 20, it is plus 6. 20 to 8, it is minus 12. Then 8 to minus 5, this is minus 30. Okay. So on and so forth. So you can see here that you cannot predict. If I ask you what is the sixth number, here you can't predict. But here you can, here in this sequence you can, and here you can't. So thus a sequence may be defined as follows. An ordered collection of numbers is a sequence if it is according to some definite rule or law. There is a definite value of an. Okay, an, that is nth term. You can define the nth term, then you say it is a sequence. If the number of elements in the sequence is finite, you say it's a finite sequence. If it is infinite, you say it's an infinite sequence. An expression of the form A1 plus A2, okay, A1 plus A2 plus so on, is called as a series. When you have the addition sign, it is a series. When you have just the numbers, it is a sequence. But while I'm talking, I may interchangeably use it, but it will depend on whatever is written in the question. Okay, so don't worry much about it. Okay, and it is this addition is given by Sn. So how is it written? Sn. N is the number of terms in the series. It is equal to, this is the sign of summation. Okay, summation R going from 1 to N U N. U R. Okay, R going from 1 to N U R. What will happen if it is an infinite series? Then you will write Sn is equal to summation R is equal to 1 to infinity U R. Okay, so infinite series and finite series.
So if the series contains fixed number of elements, then you say it's a finite series. When it is not defined, then you call it as an infinite series. Then we are going to talk about today, we are going to talk about arithmetic progression, arithmetic mean, and sum of series. Okay. So what is an arithmetic progression? When the difference between the adjoining numbers in the series, the adjoining elements in the series is same. When the difference between adjoining elements of the series or the sequence is same, then we say it is a arithmetic progression. Okay, a sequence a1, a2, a3 is called as an AP when a2 minus a1 is equal to a3 minus a2. So is it only for first four? No, it is for a10 minus a9 is equal to a15 minus a14. Okay. So any number. So if you have a sequence A1, A2, A3, A4, when do I say it's an arithmetic progression? When the adjoining difference, okay, is same. A2 minus A1 is A3 minus A2. Okay. And then we say the nth term, because when do we say it's a sequence? Okay. See, definition says there is a definite value of an. Okay. So we say, in this case, what is the definite value? Definite value is equal to Tn is equal to A plus n minus 1 n minus 1 d. So what is A? A is the first term of the sequence. Okay, first term of the sequence. N is number of elements in the sequence. Okay, that is assuming it's a finite sequence. And D is it is called as common difference. Okay. So this is what is arithmetic progression. Arithmetic progression is when the common difference between the adjoining elements is same. Okay. And the nth term is given by Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Okay, so we have talked about this. Now we'll talk about arithmetic mean. If I have three numbers A, B, C who are in arithmetic progression, if I have three numbers A, B, C who are in arithmetic progression, then B is equal to A plus C upon 2. Then this middle number is equal to A plus C upon 2, and this is called as the arithmetic mean. Then this is called as the arithmetic mean. Okay. So we have talked about arithmetic progression, we have talked about arithmetic mean, and now we are going to talk about sum of series. So sum of series is that suppose I have this arithmetic progression A1, A2. If I have this arithmetic progression A1, A2, A3 up to AN, then the sum, and then if I want to add them, A1 plus A2 plus A3 plus so on plus an, then this is given by Sn is equal to n by 2, and we know is the number of elements in the sequence, into bracket a plus l. Now what is A? A is the first term, and what is L? L is the last term. L is the last term of the series. Okay. Madam, I would like to add Yes, sir. about good afternoon, students. Good afternoon, madam. This is a very important topic, and madam has already started with arithmetic progression and a sequence about sequence also.
You all know the sequence is nothing but is some systematic format of the some integers where they according to some definite rule or law there is a definite value of the term elements of the sequence and it will be increased or something corresponding number will be going in a such direction. That is in a sequence actually. Whereas the coming to the sequence, the example of sequence is a positive integers of 2, 4, 6, 8, 10 actually, and positive odd integers and even integers. Like that, the sequence are going. We have to see whether it is a given series is a finite number or infinite number actually. Finite number means it is a countable actually. As far as our series is concerned, actually syllabus is concerned, we are dealing with only finite series only. Okay, how many terms are there? And suppose 20 terms or 23, 50 terms or like that. We know the how many numbers of the series, so how many terms we called as in the general terms actually. Suppose 50 terms, 20 terms or 30 terms, like that terms are there. Accordingly, we will be counting the of series actually, some of the series, and suppose we want to find the sum 30th number of the series, whether it is an arithmetic progression or something like a geometric progression. As for the syllabus is concerned, here the arithmetic progression and geometric progression is there. Geometric mean, arithmetic mean and geometric mean. Whereas arithmetic means here the sum of the differences of the successive terms are equal. That means difference between two terms successively it goes in the same way, same value. That is the main theme of this arithmetic mean. Whereas the where it is can be used like a simple arithmetic progression is nothing but it's used in the arithmetic mean also. When we come to the statistics also be. Now the madam has already explained about the first term is the what is called nth term is a plus n minus 1 into d. D is the difference. We called here common difference, and that this common difference is the same in the all these series also. And next is sum of n terms of the series is Sn equal to n by 2 into first term plus last term also. That is the one way of understanding. Another way, another thing is the common difference. Using that, you can find it. Okay. With this, next is geometric progression. Will be while discussing, we can throw some light, something on that part. And yes, n equal to n by 2 into 2a plus n minus 1 into d is the sum of n terms of the series. Over to madam for further taking the examples of that. I request you to complete this. Yes, sir. Yes, Okay, sir. Thank you students, so I much. wish you all the best. Yes, thank you so much. Okay, so here we are saying that what is this? This is giving me the nth term of an AP. What is this giving me? This is giving me sum of arithmetic series. What is this giving me? This formula I will use when I know both the first term and last term. If I know this, I will use this formula. If I don't know, I will use this formula. Okay, this is also sum of arithmetic series. Okay, and when I want to find the mean, that is the arithmetic mean. So what is arithmetic mean? If I have two numbers which are in
arithmetic progression, then B will be equal to A plus C upon 2. Okay. So that will be my arithmetic series, arithmetic mean. Okay. Now these are some of the important arithmetic progression sums um, and arithmetic additions also, and other than that also. So these are the special series which you must know. So sum of first n natural numbers, this is an arithmetic progression. So when I add them, so it becomes an arithmetic series. So 1 plus 2. So what is this? 1 plus 2 plus 3 is n into n plus 1 by 2. Sum of first odd numbers. Which are the odd numbers? 1 plus 3 plus 5 plus 2n minus 1. It is equal to n square. Sum of the squares of the first n natural number. 1 square plus 2 square plus 3 square will give me n into n plus 1 into 2n plus 1 upon 6. Sum of the cubes of the first n natural numbers is n into n plus 1 whole square upon 2. And if I want to have three numbers in arithmetic progression, then you should take the numbers as a minus d, a and a plus d. Okay. So we'll just revise this again. This is the formula for what? This is the formula for 1 plus 2 plus 3 up to n. Okay. What is this formula? S is equal to n square, addition. So this is Sn is equal to n into n plus 1 upon 2 when this is the formula for 1 plus 3. So all odd numbers, if I add them up, so in that case I will get equal to n square. Now what is this? This is equal to 1 square plus 2 square plus 3 square. Okay, so this is a special series where you are adding the squares of the natural numbers. What is this? This is for cubes. So 1 cube plus 2 cube plus 3 cube and so on. And what is this representing? This is representing that when I have three numbers in series arithmetic progression, then I should take the numbers as a minus d, a and a plus d. So now, what are the types of questions that they can ask you? Is this sequence is given and the nth term is asked. Some terms are given and you are asked to find the sequence. Third type is you are asked to find the arithmetic mean. Fourth is you are asked to find the sum of the series, and fifth are mixed sum, so that you will have part of it to be arithmetic and part of it to be a geometric series, and then you may be asked to find the sum. Okay. So we are going to tackle all these types of questions. First is when your sequence is given and you asked to find the nth term. Okay, so this is what we are doing. I have already uploaded the notes. You can see them. Indresh, if you're there, I just hope you are able to see the last time's uploading and also the assignment. So just have a look. Okay, so we are starting with the first sum. So this sum, this is given and you are asked to find the nth term. So what is my formula? Tn is equal to a plus n minus 1 into d, right? I know all of you have done this in your school also, but still it is better we revise because the language may be different. Okay. Now, what is the value of a? A is 1. What is the value of n? We don't know. And what they're asking you to find the nth term. So what is d? D will be equal to 3 minus 1, which is equal to 2. You should always cross check this. So this is equal to 7 minus 5, which is also equal to 2. So I will substitute over here. So I get Tn is equal to 1 plus n minus 1 into d is 2, n minus 1. So this is equal to 1 plus 2n minus 2. Okay, I expand the bracket. So this gives me 2n minus 1. So what is the nth term? 2n minus 1. So B will be the correct answer. Okay, simple.
Now the nth term of the sequences. See, this is also an arithmetic progression. Okay, sometimes it may look like it is, yes, Pavan, very good. So it may look like this thing, geometric also. So you will have to see what it is trying to say. Is it a arithmetic progression or a geometric progression? If the question is asking. Here what they are asking is find the nth term. Now -1, 2, -4, 8. Can you see that the negative sign is for the first, third, isn't it? First term, third term. So I will have -1 raised to something. Okay. Now what is the second term? This is, I can write -1 into something. So that is 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to 2, and 2 raised to 3. Okay. This is what? 2 raised to 0, 2 raised to 1, 2 raised to, isn't it? Because I am 2 raised to 0 is 1, 2 raised to 2 is 2, 2 raised to 2, 2 raised to 1 is 2, 2 raised to 2 is 4, and 2 raised to 3 is 8. Okay. So 1, 2, 4, 8. I've got the numbers. Now I need to find the for negative sign also. Now here what will happen is negative sign. This is -1 raised to n. Why? Because first term is negative, third term will be negative, fifth will be negative. So n. Now 2 raised to. Now this is what? This is 0. Okay. Here I have -1 and 2 raised to 0. Okay. What is my first term? -1 and 2 raised to 0. Second term is -1 square 2 raised to 1. Isn't it? Because this is +2. Then I have -1 cube 2 raised to 2, isn't it? 4 can be written as 2 raised to 2. -1 raised to 4, 2 raised to 3, isn't it? -1, 2 raised to 0, -1 square, 2 raised to 1, -1 cube, 2 raised to 2. Can you see every time this is one number less? So this is equal to -1 raised to n and 2 raised to n minus 1. Okay, -1 raised to n and 2 raised to n minus 1. So A will be the correct answer. Now first three terms. What happened, Akshit, Shivanand? Why don't you put in the chat box in on the portal? First three terms of a sequence where nth term is this r. Okay. Now this you have to substitute. Okay. This is easily done by substitution. So n square minus 2n. So n square minus 2n. What are we going to put? N as 1, 2, 3. Okay, I'm going to put the values of n as 1, 2, and 3, and I'm going to find out the answer. Okay, this is, so what will be n square and what will be 2n? And okay, now 1 square is 1, 1 into 2n is 2, with a minus sign, 1 minus 2, I get minus 1. 2 square, 4, 2 into 2, 4 with a minus sign, 4 minus 4, 0. 3 n square. So 3 square, 9. 3 into 2 and 6. 9 minus 6, answer is 3. Minus 1, 0, 3. So A will be the correct answer. Okay. The last term of the series 5, 7, 9 to 21 terms. Okay. This means what? A is equal to 5. N is equal to 21. Now I need to find D. Why I need to find D? Because the nth term is given by A plus N minus 1 into D. Now D will be what? 7 minus 5, which is equal to 2. लेकिन आप बिल्कुल याद रखेंगे कि कभी भी एक डिफरेंस निकाल के आप शांति से नहीं बैठेंगे, एक और नंबर का एडजॉइनिंग नंबर्स का डिफरेंस निकालेंगे, ताकि कभी क्या होता है साइन में गलती हो जाती है. तो 9 minus 7. So 9 minus 7, it is also equal to 2. Okay. So now I have D equal to 2. So Tn,
So T21 is equal to 5 plus 21 minus 1 into D is 2. So I will first solve the bracket. This is 5 plus 20 into 2, which is equal to 5. BODMAS लगाएंगे हर बार, is equal to 40. 40 plus 5, answer is 45. Okay, so C will be the answer. Okay. Now let us go to the next sum. The last term, yes, Pavan, 45 is correct. The last term of the AP, 0.6, 1.2, 1.8 to 13 terms is. Okay, so what is my A? A is 0.6. What is my N? N is equal to 13. What is my D? D is equal to 1.2 minus 0.6, which is equal to 0.6. और हम कभी भी एक के लिए रुकेंगे नहीं. 1.8 minus 1.2, which is equal to 0.6. Okay. So I have A, I have N, and I have D. So Tn is equal to A plus N minus 1 into D. This is equal to 0.6 प्लस अभी मैं डायरेक्ट लिखूं, आप सबको मालूम हो गया ना n-1 क्या है, जो n है उसमें से -1 करना है, तो 13 - 1 मैं यहाँ डायरेक्टली 12 लिख रही हूँ. ओके, 12 कहाँ से आया? 13 - 1. ओके, सो 12 into 0.6. वेरी गुड पवन. So this is equal to 0.6 plus 7.2. Answer is 7.8. So T13 is 7.8. Okay. Now let us go to the next sum. The 20th term of the progression 1, 4, 7, 10 is. Okay, so what is happening in this is the sequences are given and you are asked to find the nth term. Okay, so Tn, which is equal to A plus n minus 1 into D, is what is it, Akshat? अशोक जी जरा अनम्यूट करेंगे उनको, 1 मिनट. हाँ, yes, Akshat, what do you want to ask? Hello, ma'am. हाँ, yes. Tn means what, ma'am? nth टर्म मतलब जैसे 20वां टर्म क्या होगा उसको nth बोलते हैं, क्योंकि हमें मालूम नहीं ना. आप मुझे 20th पूछ सकते हैं, कोई मुझे 15th पूछ सकता है ना, इसीलिए जैसे रिप्रेजेंटेशन जो अननोन है ना, जैसे हम लोग Hello. x लेते हैं, abc लेते हैं. ओके, It's called notation actually, or symbolically we can say. Suppose if you want to find the 10th term, T10 equal to A plus 9D. Hope you understand. A means first term, D means the common term difference. And n minus 1 means, sir? N minus 10, 1. 10 minus 1. 10 minus 1 is the ninth term. Then D means. We want to. D is the common difference. Common difference is equal for all the first term to second term to first term, third term to second term, and the fourth term to third term. All are same. That is okay. Hope you understood. we have shown D is equal to 1.2 minus 0.6. The second term minus first term, then third term minus second term. So that is D. And 13 is the N here. Okay. So here what is the asking? 20th term. So I'm going to write T20. What is A? A is 1. What is N? N is 20. So 20 minus 1. And what is D? Now D. D is equal to 4 minus 1, which is equal to 3, which is also equal to 7 minus 4, which is equal to
3. Okay. So D I'm going to write as multiplied by 3. I will follow BODMAS. I will first multiply the brackets, solve the brackets, and then do the multiplication and then addition. So 1 plus 20 minus 1 is 19 into 3. So I first multiply. This is 57 plus 1. Answer is 58. So what is the 20th term? It is 58. Yes, Pavan, correct. Oh, Mr. Pawan, you have understood, and madam, you go ahead with Yes, sir. So you now go what ahead with another example. Yeah. Yes. Now, what are the other types of questions? Some terms are given and then you are asked to find the sequence. Okay. So here what they have done, they have said if 5th and the 12th term of an AP are 14 and 35, find the AP. Okay. So here what they have done is they have given us. So what are you supposed to find? You are supposed to find A and you are supposed to find D. Once you know A and D, then you can find the sequence. Okay. तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या करेंगे? इसमें क्या करेंगे? फाइंड ए एंड फाइंड डी. एक बार ए और डी आ गया तो हम उसको सीक्वेंस को लिख सकते हैं. ठीक है. तो उसके बाद एन ढूंढने की जरूरत नहीं क्योंकि हमें जनरल टर्म निकालना है. वी जस्ट वांट टू फाइंड द सीक्वेंस. ओके. तो इसमें याद रखना है एपी के लिए ए और डी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के लिए ए और आर है. ठीक है. ना 5th टर्म T5 में कैसे लिख सकती हूँ? A प्लस 4D है ना. A प्लस n माइनस 1, 5 माइनस 1 4 हो गया. A प्लस 4D इज इक्वल टू 40 और T12 कितना हो गया? A प्लस 11D इज इक्वल टू 35. ओके. A प्लस 4D इज इक्वल टू 14, A प्लस 11D इज इक्वल टू 35. I subtract. So what do I get? 4 minus 11, that is minus 7D, and 14 minus 35 is minus 21. 35 minus 14 is minus 21. So D is equal to minus 21 upon minus 7. Answer is 3. Okay. तो एक मिल गया चीज. अभी हमें दूसरा क्या ढूंढना है? A ढूंढना है. Okay. So I can put it in either of the equation. So I am going to write A plus 4D is equal to 14. A plus, this is equal to 4 into D is 3 is equal to 14. So A plus 12 is equal to 14. तो ये प्लस 12 इधर लेके जाएंगे, माइनस हो जाएगा. तो A is equal to 14 minus 12. Answer is 2. Yes, Pavan. Exactly. You're getting it right. So what will the answer be? आंसर क्या होगा? A plus D, A plus 2D, A plus 3D and so on. ऐसा arithmetic progression can be written as A plus D, A plus 2D. Okay. So अभी हमारा A कितना आया है? 2. A plus 2D मतलब 2 plus 3. 2 plus 2 into 3, 6. 2 plus 3 into 3, 9 and so on. So what will be the sequence? 2, 5, 8, 11 and so on. Okay. So this is the sequence that you are supposed to find. Arithmetic problem का sum होगा, arithmetic progression का sum होगा, तो आपको A और D निकालना है. आप उसके लिए आपको कुछ कोई ना कोई वो 2 टर्म्स दे देंगे. उन 2 टर्म्स को साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करके आप A और D को निकाल सकते हैं और आपको आंसर आ सकता है. एग्जाम में आपको ऑप्शंस दिए रहेंगे तो उस ऑप्शंस में आप डाल के आराम से देख सकते हैं. ये मैंने जानबूझ के लिया है ताकि आपको कॉन्सेप्ट भी पता हो, आपको किस तरह से, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इसको इतने आसानी से कर सकते हैं ना. यहाँ तो आपको देखो, आपको किसी भी इक्वेशन को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा. A plus 4D, A plus 11D, ये तो डायरेक्टली आप कर सकते हैं. तो उससे आपको क्या हो जाएगा? तुरंत आपको D की वैल्यू मिल जाती है और D की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में डालेंगे आप एक की वैल्यू मिल जाएगी
और उसके बाद आपको सिर्फ याद ये रखना है, ए प्लस डी, ए प्लस, ये कर दिया ना, तो आपको आपका एपी आ जाएगा। एग्जाम्पल 4, नो दैट इज जस्ट अ वे, दैट इज अ शॉर्टकट। ओके शिव, अभी शिव पूछ रहे हैं कि अगर 3 नंबर्स इन सीरीज होंगे, 3 नंबर्स आर इन एपी, okay, 3 numbers are in AP, so you usually take a minus d, a plus d. So why do we do that? That is for ease of calculation. This is a shortcut. आप लेने को तो a plus d, a plus 2d ये भी ले सकते हैं उसमें, लेकिन इससे क्या हो जाता है, आपको आंसर जल्दी आ जाता है। तो उससे क्या होता है, सी if I take this, so if I take this, what will be the sum of AP? a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, है ना। तो ये माइनस डी प्लस डी कैंसिल हो जाएंगे, आपका सम ऑफ एपी क्या हो गया, 3a आ गया। तो इससे आपको डायरेक्ट a की वैल्यू मिल जाती है, ठीक है। तो दैट बिकम्स इजियर, बाकी कुछ नहीं। ओके, आई जस्ट सी फोर्थ एग्जाम्पल, अगर मैंने नहीं लिया है तो मैं ले लूंगी, ठीक है। मेरे को देखना पड़ेगा, मैं स्टडी मटेरियल निकाल के देखती हूँ। फोर्थ एग्जाम्पल देखते हैं, मिनट। ओके, let's see. This is the sum you're saying, na? E minus G. Divide 69 into 3 parts. Right, Shiv? This is what you want? Okay, yeah. I'll just take that. See, because it's a study material, it does not let me write. So I'll just take it on my, let's see. Okay, yes, no problem. I'll just take it. Thank you for putting the question also there. Yes. Divide 69 into 3 parts. Okay, 69 into 3 parts such that products of the first 2 part is 483, right? Now, thank you. Let the 3 numbers be a minus d, a plus d. Okay. Now let me check whether these numbers are in AP. So what will happen? What should be the common difference? Second term minus first term. So a minus d. So a gets cancelled. This is a minus a plus d. So you are getting d, which is the common difference. Let me see. As always, I always check a plus d minus a. Again the a will get cancelled. You will get d, है ना। मतलब जो हमने a minus d a plus d लिया वो तो हमें 100% मालूम है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है। Now divide 69 into 3 parts. So what will happen? Sum will be equal to how much? A minus d plus a plus d, है ना। ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है और ये थर्ड टर्म है। इनका टोटल कितना है, 69। इनका टोटल कितना है, 69। नाउ a माइनस d प्लस डी, तो ये कैंसिल हो जाता है, ये हो जाता है 3a, a plus a plus a 3a. So from here I get a is equal to 69 upon 3, which is equal to 23. I've already got the value of a. Okay. Now what they want is the multiplication of the first 2 parts. This is my first part.
and this is my second part. Okay, this is my first part, this is my second part. So multiplication of a minus d into a is given to me as 483. Now a I know is 23, so a minus d 23 into a minus d is equal to 483. So a minus d is equal to 483 upon 23. Now let me see how much is this. 483 divided by 23 is 21. So a minus d is 21. A I already know is 23. 23 minus d is equal to 21. So d 23 minus 21 is equal to d, which is equal to 2. So I got, यहाँ से मुझे क्या मिला, a 23 आया और यहाँ से कितना मिला, d2 आया. अब मेरे तीन नंबर्स क्या हैं, a माइनस डी, a प्लस डी. तो क्या क्या नंबर्स हो जाएंगे, 23 माइनस 2, 23 and 23 plus 2. 23 minus 2 is 21. This is 23 and this is 25. ठीक है, हम एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे. 21 into 23 करके देख लेंगे, वो आता है हमारा 483. Okay, please remember this shortcut is for odd number of elements in the series. Okay, so a minus d, a plus d, ये तीन है. 5 हो गया तो क्या लिखेंगे, a plus 2d, a minus d, a plus d और a plus 2d. अगर 4 होंगे तो ये वाला यूज नहीं कर सकते, ये 3, 5 उनके लिए है, क्योंकि बीच में हमारा ये a आ रहा है. ठीक है, I just hope, yes, now you got this as the answer. Yes, Shiv? Got it? Yeah, thank you. Welcome, always welcome. Okay, see, everybody, he has put it in the portal, and so I could attend to your query immediately. Most probably I must have taken this sum later on, but it is okay. अभी आपके दिमाग में आ गया, आपकी query solve हो गई, that's the best thing, right? You are asked to find the arithmetic mean. तो अभी first type का हो गया, second type होगा, अब हम arithmetic mean के sums करेंगे. Those are also very important. Why? Because then you have the combination of arithmetic mean and geometric mean and sums based on those. Okay, so we could do that. Find the arithmetic mean between 4 and 10. Okay, so what you have is 4-10. So when I have three numbers, okay, three numbers in series. So what will this happen? This will also be what? It will be in arithmetic progression. अगर जो मीन आप उसमें दो नंबर्स के बीच में डाल रहे हैं तो वो सीक्वेंस तो वैसे भी अरिथमेटिक रहेगा. सो अगर इसको मैं x बोलती हूँ तो x इज व्हाट, हमने बोला था ना a b c होगा. If three numbers are in this series, so then b will be the arithmetic mean is equal to a plus c upon 2. Okay, so this will be 4 plus 10 upon 2, which is equal to 7. Sorry, 14 upon 2, which is equal to 7. Okay. So you can even get these simple types of sums also. Yes, Pavan, very good. Now insert 4 arithmetic mean between 4 and 234. Okay, so this is my 4, then 1, 2, 3, 4 and 324. Okay, इस तरह लिखेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी. अभी मैं दो तरीके से हैं जो मैं फॉलो करती हूँ, मैं बताती हूँ. इसको मैं a बोलती हूँ, इसको मैं a plus d बोलती हूँ, a plus 2d, a plus 3d, a plus 4d और ये हो गया a plus 5d. Okay, so from here what do I get? A plus 5d is equal to 324. A I know is 4. 4 plus 5d is equal to 324. So 5d is equal to 324 minus 4, which is equal to 320.
So D is equal to how much? 320 upon 5, that is 64. Okay. Once I know that, what will be A plus D? ये कितना हो जाएगा? 4 plus 64. This will be 4 plus 64, which is equal to 68. ये क्या होगा? 4 plus 128, है ना? 64 का डबल 128, ये हो गया 132. ऐसे ही A plus 3D. 364 ये यहाँ पे 3D करती हूँ. 3 हो गया 192. 200. 192 प्लस 4 ना 196 होगा पवन. 196. 4D कितना हो गया? 16. 256. 256 प्लस 4, 260. ओके. सो इस तरह से आपको आ जाएगा 68. So what are the four? These are the 4 arithmetic means to be inserted. Pavan, just check this thing. I hope all of you are understanding this, and those on YouTube, please don't forget to press the like button. Two arithmetic means between -6 and 14. Okay. So we are again doing this. So -6 dash dash 40. Okay. I call this as A. This is A plus D, A plus 2D, and A plus 3D. Two arithmetic mean between this. So -6 dash dash 40. क्योंकि हम अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करते हैं तो अरिथमेटिक मीन भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही होने चाहिए, तो ही उनको हम अरिथमेटिक मीन बोलते हैं. सो अभी ये क्या हो गया? A प्लस 3D इज इक्वल टू 14 प्लस 14 है ना. सो A मुझे मालूम है -6 है. सो 3D विल बी इक्वल टू 14 प्लस 6 है ना. -6 यहां से लेके जाएंगे. तो अभी धीरे धीरे क्या करना है, हमें स्पीड बढ़ाने के लिए हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. तो 3D इज इक्वल टू 20. तो D कितना हो गया? 20 अपॉन 3, विच इज इक्वल टू 6 and 2/3. ठीक है. 14 plus 6. Yes. Now, what will be the two arithmetic mean? A plus D. A plus D is equal to -6 plus 20 upon 3. Okay. -6 plus 20 upon 3. -18 plus 20 upon 3, which is equal to 2/3. Okay. Now, A plus 2D is equal to -6 plus 2 into 20 upon 3. So this is -18 plus 40 upon 3. So this is equal to 22 upon 3, which is equal to 7 1/3. Okay. इस सम में आपको ऑप्शन से जाना डिफिकल्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ बहुत सारे मिक्स फ्रैक्शन है या बहुत सारा फ्रैक्शन होने की वजह से आंसर में हमसे गलती हो सकती है. अगर हम डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना चाहे तो कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं है, लेकिन इस ऐसे सम्स में डायरेक्ट आंसर निकालना हमको इजियर जाएगा. ओके. सो व्हाट आर द टू arithmetic means that we can insert is 2/3 and 7 1/3. So B will be the answer. Okay. See, again here they have given us confuse करने के लिए माइनस साइन भी दे दिया है, तो आपको वहां पे केयरफुल रहना है. Let us go to the 20th sum. ये हमें बोल रही थी, ये एकदम आप आराम से आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे करना है, आपको कुछ भी लिखना नहीं. व्हाट इज द अरिथमेटिक मीन बिटवीन 33 एंड 77? आप कैलकुलेटर पे 33
प्लस 77 करेंगे तो 110 आ जाएगा। उसको आपको कैलकुलेटर की भी जरूरत नहीं है, तो डायरेक्ट आ जाएगा। 77 प्लस 33 इज गिवन मी 110। 110 डिवाइडेड बाय 2, आई एम गेटिंग द आंसर एज 55, राइट, है ना। 10 सेकेंड्स में आपको आंसर आ सकता है। तो आपको कोई भी ऐसी चीजें ऑप्शन में नहीं डालनी, आपको क्वेश्चन ठीक से पढ़ना है और फिर डिसाइड करना है। The four arithmetic means between this. I'm particularly taking these terms up because these are very popular sums. So I have -2 dash 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 23. Okay. So ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा A plus D, A plus 2D, A plus 3D, A plus 4D और A plus 5D. ओके, इस तरह भी कर सकते हैं और हम यहाँ ऑप्शन से भी दिखाते हैं अभी। 3, 13, 8, 23. ओके, 3, 13 डिफरेंस इज हाउ मच? +10. दिस 13 माइनस 8 और 13 में डिफरेंस कितना है? -5. And 8 and 18 plus 10. Is this in AP? No, it is not in AP. AP में common difference same होना चाहिए. So this is not the, this cannot be the answer. Again here 18, 3, 8, 13. ये हो सकते हैं क्या? ये भी नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पे कितना है? -15. यहाँ पे कितना है? +5. यहाँ पे कितना है? +5, है ना। तो ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? +5. यहाँ क्या हो रहा है? +5. यहाँ क्या हो रहा है? +5, राइट। ये हो रहा है। नाउ लेट अस ट्राई टू पुट इट ओवर हियर। -2, 3, 8, 13, 18 और 23, है ना। ये वाले तो दिए हुए हैं और ये सी ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं। इन द सी ऑप्शन नाउ -3 to 3, -2 to 3. दिस इज व्हाट डिफरेंस इज हाउ मच? डी कितना हो गया? 3 माइनस ऑफ -2, ये आ गया 5. माइनस ऑफ -2 इज +2, 5. ये तो मुझे मालूम ही है 5 है ना, अभी निकाला है। ये भी देखा, इन दोनों का डिफरेंस मैंने 5 निकाला है, इन दोनों का 5 निकाला है, इनका भी 5 है। अब ये देख लेते हैं, 23 - 18, इसका भी आंसर 5 होता है। तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, सो आपको मैंने ये वाला दोनों तरह से दिखा दिया। आइदर यू कैन सॉल्व ऑल्सो और यू कैन सिंपली लुक एट दिस and you can get this answer. These two, just looking at the options A and B, we know that they are incorrect, and so we are getting only the C is the possible option, or C or D, ना, none of these भी हो सकता है। तो इसीलिए Question 17 from ठीक है कनिका, मैं देखती हूँ। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली मैं करने ही वाली हूँ। देखते हैं। ओके, ये हो गया, मतलब हमने टीएन निकाल लिया। सो nth टर्म, उसके बाद हमने सीक्वेंस भी निकाला कि आपको 2 टर्म्स दिए, उससे आपको सीक्वेंस निकालना है। उसके बाद हमने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिया, अरिथमेटिक मीन निकाले, अरिथमेटिक मीन इंसर्ट भी कर लिया। और लास्ट पार्ट जो रहता है, यू आर आस्क्ड टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। ओके, तो हम सम ऑफ द सीरीज वाले करते हैं। अभी इसमें देखिए, ये वाले इसमें जो पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे ही है। दिस इज -5, 25, -25, 625। तो यहाँ क्या हो रहा है? -1 रेस टू कितना है? यहाँ 1 है। इसको नीचे ही करते हैं। So this is -5. This is my first term. This is 25. This is -25, and this is 625, and so on. And the sum is to infinity. So इसको क्या लिखूंगी मैं? -1 रेस टू 1, इसमें है -1 स्क्वायर, यहाँ -1 क्यूब, -1 4। ओके, ये माइनस साइन के बने। अब मैं 5 के बारे में लिखती हूँ। ये हुआ 5^1, यहाँ हुआ 5^2, 5^3,
आया नहीं ना हैंड राइटिंग. This is 5 raised to 1, this is 5 raised to 2, this is 5 raised to 3, this is 5 raised to 4. ये हरदम जब भी आपको साइंस का होगा ना तो आप इस तरह से करिए. तो अभी आपको पता लग गया कि ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है. आपने अगर इफ यू कैन अप्रिशिएट द लास्ट सम व्हाट वाज हैपनिंग, द numbers were different, like one was bigger, one was smaller. So here what is happening is this is minus 1 raised to n and 5 also raised to n. Okay. अभी इन्होंने k लिया है, ठीक है. So we are going to write this as 1 raised minus 1 raised to k and 5 raised to k. You must know that there is a summation sign, k going from 1 to infinity. So this is k going from 1 to infinity. So I can either have minus 1 raised to k, 5 raised to k, or I can have summation k going from 1 to infinity minus 5 raised to k. A raised to m and b raised to m. So you can write ab raised to m. So ये कौन सा है? C is the correct answer. Okay. Okay. Fine, we'll take a break and then we'll come back and we will do this thing 17th from 6. I'll just write down. 6 is 17. Yes, Somil, can you put it in the chat box what you want? अशोक जी इनको अनम्यूट कर देंगे सोमिल को. बोलिए सोमिल. मैं अभी ये पिछला समझो आपने करा, इसमें ऑप्शन ए भी तो हो सकता है आंसर. हाँ, इसमें दोनों का सेम आ रहा है क्या? ओ नहीं नहीं, सी नहीं है, ए ही है. अच्छा हो गया आपने बोला. वो ब्रैकेट नहीं है ना यहाँ पे. तो मैम ब्रैकेट से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि हाँ हाँ, ये क्योंकि तो हुए. इसमें क्या हो जाएगा अभी बताते. इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये करेक्ट है. इसमें क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? -5 raised to 1 -5 raised to 2. तो ये -5, ये -25, ये -125 हो गया. ठीक है. यहाँ पे माइनस साइन को ब्रैकेट नहीं है तो माइनस के से अफेक्टेड नहीं है. यहाँ पे क्या हो रहा है? माइनस साइन भी के से अफेक्टेड है. तो ए ही करेक्ट आंसर है, सी नहीं है. थैंक यू. ये तो गलत हो गया मुझसे. सो ए -5 होल थिंग रेज टू के. इसीलिए मैंने ये यहाँ पे ऐसे लिखा है. देखिए -1 रेज टू के है. इसमें क्या हो जाएगा? सब जो एलिमेंट्स होंगे इस सीरीज के सीक्वेंस के वो सब नेगेटिव होंगे. ठीक है. ओके, ब्रेक ले लें.
the question is there in my list, so I will be taking up that also. Yes. The sum of the series 9, 5, 1 to 100 terms is, okay, the sum of the series थोड़ा सा शायद बाद में है. डोंट वरी, वो लेने वाली हूँ मैं. क्वेश्चन तो है मेरे इसमें, एजेंडा में है. The sum of the series 9, 5. Okay. So now what do I have? Do I have the value of, I have two formulas for the sum. One is n by 2, a plus n. Okay. So it requires first term and last term. Do I have the last term? No. They are saying up to 100 terms. Okay. So either I calculate the 100th term and then I find this thing, or I can find the, so the second formula is Sn is equal to n by 2 twice a plus n minus 1 into d. ठीक है. तो इसमें क्या होगा, आपको n तो दिया है 100, a मालूम है 9 है, लेकिन d नहीं मालूम है. तो आपके ऊपर है आपको कौन सा इजी रहता है. अभी मैं इस वाले फॉर्मूला से करती हूँ. इसमें देखिए आपको डिफरेंस यहां से पता लग जाएगा. 5 माइनस 9 माइनस 4 है. ठीक है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप डिफरेंस ठीक से निकालें. 5 माइनस 9 it is minus 4. 1 minus 5 it is minus 4. हर बार दो करके फिर आप उसको लेंगे तो आपको आसानी हो जाएगी. ठीक है. Now this is minus 4. So I have the value of d. So s 100 माने क्या हो गया, 100 terms की addition. So what is this? n is 100. So 100 upon 2. What is my value of a? 2 into 9 plus 100 minus 1, तो ये हो गया 99. d कितना आया मेरा, -4. ठीक है. This you have to be careful. So this is 100 upon 2 is 50. This is 80. Now 99 into 4. 99 into 4 आ गया 396. But with a minus sign. Minus. इसको मैं रेड से लिखती हूँ. So that is minus 396. Okay. So this is equal to how much? Plus 18, 378. Into 50, I get 18 minus 18900. Okay. Yes, Pavan, but with a minus sign. Why? Because you are getting that as minus. Okay. Now let us go to the next sum. That is the 25th sum in the series. The sum of the series is, इसको आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं. So that is 3.5, 7, 10.5, 14. ओके. तो डिफरेंस कितना हो गया, 7 माइनस 3.5, दोनों का डिफरेंस आ गया 3.5. तो डी हो गया 3.5. हम हर बार कंफर्म करते हैं. 10.5 माइनस 7, इन दोनों का डिफरेंस भी 3.5 आ गया. So what is the sum of the series? Sn is equal to n by 2 twice a plus n minus 1 into d. They are asking you up to 17 terms. So S17, which is equal to 17 upon 2 into bracket 2 into 3.5 plus 17 minus 1 कितना हो गया, 16. D कितना है, 3.5. So this is equal to how much? 18 into 3.5, 63 into 17, 1071 upon 2. 1071 upon 2, which is divided by 2. 535.5. Okay, so C will be the answer.
तो इसको अगर ये आंसर और यहाँ पे डेसिमल नहीं है, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको फ्रैक्शन को कन्वर्ट कर लीजिए। हाफ का कितना होता है? 0.5 होता है, 535.5। ये और ये आपका आंसर सेम आ गया ना, सो यू विल गेट दी आंसर। Okay. Now let us take some mixed sums. देखिए इस तरह से अंडर रूट के क्वेश्चंस आ गए, वो भी डिनोमिनेटर में, तो हम लोग बहुत डर के भाग जाते हैं, है ना। हम लोग को सबको लगता है भैया बहुत टाइम लगने वाला है, लेकिन आप थोड़ा सा शांति से करेंगे ना तो आपको दिखेगा कि these are the sums that you can easily do it. So what I'm going to do, which term of the AP is this? अब वो क्या पूछ रहे हैं कि एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आपको दिया हुआ है और उसमें उनके पास एक टर्म है जो वो एपी को बिलोंग करता है, लेकिन वो पूछ रहे हैं कौन सा टर्म है, वो टी एन है ना। जो अंकित अक्षित पूछ रहा था कि टी एन मतलब क्या है, तो वो कौन सा नंबर का टर्म है 17/√7। सो मैं क्या करती हूँ, देख रहे हैं हम डिनोमिनेटर सब में √7 है, सो आई जस्ट राइट इट √7 और I'm going to just write the numbers. So what will the numbers be? 3, 4, 5. है ना, तो ये सिंपल है ना, 3, 4, 5. This is simply what? Natural numbers. 3, 4, 5. What is here A? So I know A is equal to 3/√7. तो अगर मुझे कोई भी डर है ना तो मैं कॉमन आउट निकाल के मेरे को दिख जाएगा। तो इसमें A है, D कितना है? 4/√7 minus 3/√7. So √7 is common. So what do I get? 1. यहाँ से दिख ही रहा है ना, 4 minus 1, 5 minus 4. So D is √1. I will also write 5/√7 minus 4/√7 which is equal to 1/√7. मेरा A भी आ गया, D भी आ गया। अभी TN is equal to A plus n-1 into D. अभी ये n ही पूछ रहे हैं ना, तो 17/√7 is equal to A कितना है मेरा? 3/√7। n-1 मुझे मालूम नहीं, D कितना है? 1/√7। अब आप देख रहे हैं तीनों टर्म्स जो है प्लस के डिनोमिनेटर में √7 है, तो उसको निकाल देंगे बिकॉज इट इज कॉमन इन ऑल द टर्म्स। हाँ, ऐसा नहीं है दो टर्म्स में है तीसरे में नहीं है तो नहीं करेंगे, फिर एलसीएम लेंगे। ओके, when the denominators are same for all the terms, then only we can remove it. If not, we will take the LCM. In this case, √7 is common, so this is 17 is equal to 3 plus n-1 into D. So 1, not D. Okay, 1. So what does it give me? n-1 is equal to 17 minus 3. So n-1 is equal to 14. So n is equal to 15. So answer is 15. Is that clear? Power not 13, 15. Okay. This is the sum Shiv had told. जिनका मिस हो गया उनके लिए तुरंत फटाफट बता देती हूँ। 3 नंबर्स लीजिए, A-D, A और A+D, उनको सम करेंगे। If I'm going to sum them, so this will become 3A is equal to 69. So I get A is equal to 23. Okay, and then product of the first two parts. So A-D into A is equal to 483. So 23 into A-D is equal to 483. So I get A-D
to be equal to 20, कितना आया था वो, 21 था शायद ना. So 23 minus D is equal to 21. So D is equal to 23 minus 21. So D is equal to 2. So the three numbers are 23 minus 2, 23 and 23 plus 2. Okay. So I get 21, 23, 25. Okay. अभी ये वाला summation I going from 4 to 7 under root of 2i minus 1 can be written as. Okay. You don't have to worry, you only have to substitute. क्या क्या करेंगे हम? I is equal to 4, क्योंकि क्यों you have to be careful, वहां क्या लिखा है. I is equal to 4 डालेंगे इसमें, तो I 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 4 माइनस 1, ये कितना हो गया, स्क्वायर रूट ऑफ 8 minus 1 which is equal to square root of 7. दूसरा I 4 to 7 है, तो दूसरा नंबर क्या आएगा, I is equal to 5, 4 plus 1. So square root of 2 into 5 minus 1 which is equal to square root of 10 minus 1 which is equal to square root of 9. I is equal to 6. ये हो गया square root of 2 into 6 minus 1 which is equal to square root of 12 minus 1 which is equal to square root of 11. I is equal to 7. Square root of 2 into 7 minus 1 which is equal to square root of 14 minus 1 which is equal to square root of 13. आंसर क्या आता है, A. Okay. इसमें because there is a square root involved, it is better that you do it so that there is no confusion. हमको एकदम जल्दबाजी में ये आंसर लग सकता है बी, लेकिन ए इज द राइट आंसर. Which term of the progression is minus 39? अभी तो हम एपी कर रहे हैं, लेकिन हमें हर बार ये चेक करना है कि कॉमन रेशियो है या कॉमन डिफरेंस है. अभी इसमें हम देखते हैं पहले कि कॉमन डिफरेंस होगा तो ही ये एपी होगा, तो उस हिसाब से हमें फॉर्मूला यूज करना है. सो फर्स्ट चेक कॉमन डिफरेंस, इफ नॉट देन कॉमन रेशियो. ओके, आपको ये देखना है. नाउ -1 3, सो -3 minus of -1 is equal to how much, -2. -5 minus of -3 is equal to -2. ये सेम आ रहा है ना, तो therefore given is an AP. ठीक है, ये हमने कंफर्म कर लिया कि जो दिया है वो AP है. अब वो AP है तो हम Tn is equal to A plus n minus 1 into D. ठीक है, Tn कितना दिया है, -39. A हमारा कितना है, -1. n कितना है मालूम नहीं, n-1. D कितना है, -2. ओके, जस्ट बी वेरी वेरी केयरफुल विद द साइंस. सो -39 इज इक्वल टू -1, ये -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2n plus 2. So my +2 -1 is +1. +1 इधर जाएगा तो ये -39 -1 is equal to -2n. -2n is equal to -40. n will be equal to 20. Yes, Pawan, correct. गुड. आप लोग भी सब पवन की तरह फटाफट कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए. तो क्या हो जाता है कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाती है, स्पीड भी बढ़ जाता है. और गलती होती है, कोई बात नहीं, उसके भी कभी कभी कुछ गलत आंसर आ गए तो कोई प्रॉब्लम नहीं ना, उसको हरदम से याद रह जाएगा, अरे उस समय मैंने ऐसे किया था. ओके, वेरी गुड. द वैल्यू ऑफ x सच दैट 8x plus 4
will form an AP. So to form an AP, second term minus first term should be equal to third term minus second term. Okay, that is same common difference. ये आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ, ऐसे कोई जरूरत नहीं पड़ती. T2 minus T1 is equal to T3 minus T2. ये मेरा T1 है, ये मेरा T2 है और ये मेरा T3 है. ठीक है. So 6x minus 2 minus of 8x plus 4. ठीक है. Should be equal to T3 is 2x plus 7 minus 6x minus 2. Okay. This is how much? 6x minus 2 minus 8x minus 4. And this is equal to 2x plus 7 minus 6x plus 2. This gives me how much? Minus 2x minus 6 is equal to minus 4x plus 9. Okay. So, let me do this. This will become 2x and minus 6 coming to this side will be 15. So, x will be equal to 15 upon 2. Do I have this answer? Such a thing? Yes. So, C will be the answer. Okay. So, you just have to use this important thing of common difference. T2 minus T1 and T3 minus T2. Okay, this is also interesting. The nth term of an AP is n. Tm will be equal to A plus m minus 1 into D. Nth term is, they are saying is n. So I have n is equal to A plus m minus 1 into D. Similarly, Tn is equal to A plus n minus 1 into D. Nth term is m. So, matlab m is equal to A plus n minus 1 into D. Okay. अब वो पूछ रहे हैं TR which is equal to A plus n minus 1 into R minus 1 into T. Okay. So, now n is equal to A plus m minus 1 into D and this thing. Okay. Now, if I write this over here, m is equal to A plus n minus 1 into D. If I subtract, what will I get? N minus m, ये plus A minus A cancel हो जाएगा, is equal to m minus 1 into D minus n minus 1 into D. This is equal to m minus 1 minus n plus 1 into D. D कॉमन निकाल लिया इनमें से, ये प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस m इज इक्वल टू m माइनस n इंटू डी. अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है जो आप अगर ध्यान में आ गया तो बस आपको आ गया. नाउ व्हाट आई हैव टू डू हियर इज टेक minus 1 out
on LHS। तो ये क्या हो जाएगा, -1 n माइनस m क्या हो जाएगा, m माइनस n हो जाएगा, विच इज इक्वल टू m माइनस n इंटू d। ठीक है, सो d क्या हो जाएगा, -1 m माइनस n अपॉन m माइनस n। तो ये m माइनस n कैंसिल हो गया, ये कितना आया, d इज इक्वल टू -1। ओके, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप हियर, d इज इक्वल टू -1। अगर d -1 है तो मैं a की वैल्यू निकाल सकती हूँ अब। सो I have the equation n is equal to a plus m माइनस 1 इंटू डी, मेरा आ गया -1, वो डाल दिया यहाँ पे। सो n इज इक्वल टू a -1 इंटू m हो गया -m, और -1 इंटू 1 हो गया +1। तो a हो गया, ये -1 +1 उधर लेके जाएंगे तो m प्लस n -1, a हो गया m प्लस n -1। ओके, नाउ tr विच इज इक्वल टू a प्लस r -1 इंटू d। a कितना है मेरा, m प्लस n -1। d कितना है मेरा, ये मेरा a है, प्लस r -1 इंटू -1, है ना, d मेरा -1 है। सो दिस इज इक्वल टू m प्लस n -1, -1 इंटू r -r हो गया, -1 इंटू 1 +1 हो गया, और ये -1 ये +1 कैंसिल हो गया, तो मेरा टी आर आ गया m प्लस n -r, m प्लस n -r। तो D will be the correct answer. Yes, Pavan, you can use this method, similar method for similar questions. Okay. So इसमें आपको ये देखना है, the mth term of an AP is n। तो ऐसे जब थोड़ा सा भी कंफ्यूजिंग लगे ना, क्योंकि तुरंत उसके बाद क्या लिखा है, nth term is m, तो आप उन दोनों को अलग अलग से लिखिए, साइमल्टेनियस से सॉल्व करके आपको d मिल जाएगा, a मिल जाएगा, और आपको सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, now we are doing this. The number of terms of the series 10, 9 2 by 3, 9 1 by 3 will amount to 155 is. Okay, तो अभी वो क्या बोल रहे हैं, आपको सम दिया हुआ है और आपको ये निकालना। सोमिल, एक मिनट, मैं जितना हो सकेगा कवर करती हूँ और फिर मैं वो वापस करती हूँ, मुझे मालूम है उसमें थोड़ा सा ये होगा, और कुछ नहीं अगर हम लोग को टाइम मिला तो आप यूट्यूब पे वापस वहां से देख लेंगे। ठीक है, आई ट्राई टू एज फार एज पॉसिबल। और क्या है, अगले बार भी हमारा ज्योमेट्री प्रोग्रेशन है ना, उस समय भी ये जो इम्पोर्टेंट 2-3 सम्स है ना जहाँ माइनस साइन है, वो सब वाले मैं वापस से ले लूंगी। द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीरीज, अभी पहले हमको ये देखना है कॉमन डिफरेंस है क्या, मतलब एपी है या जीपी है, ये हमें पहले से देखना है। दिस इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, सॉरी, 27 + 2 29, दिस इज 29 अपॉन 3। 9 2 by 3 क्या हो गया, 29/3, और 10 को कैसे लिख सकते हैं, 30/3, तो ये हो गया -1/3, है ना। 10 को कैसे लिखा हमने, 10 इंटू 3/3, तो ये हो गया 30/3। दूसरा क्या है, 9 1/3, तो ये हो गया 27 + 1 28/3 -29/3, आंसर आ गया -1/3। मतलब ये जो सीरीज दिया है वो एपी है, हाँ, अरिथमेटिक है। अभी उन्होंने क्या बोला, अमाउंटिंग टू 155, तो मेरा ए कितना है, ए इज इक्वल टू 10, डी कितना है, अभी आ गया -1/3। आई एम यूजिंग द फॉर्मूला, Sn इज इक्वल टू n/2 ट्वाइस a प्लस n-1 इंटू टी। ये फॉर्मूला मैं यूज कर रही हूँ। I already know this is 155. Okay,
नाउ आई कैन डू व्हाट, आई कैन सब्स्टिट्यूट एनी ऑफ दीज एंड फाइंड आउट। ठीक है, तो उस समय उससे भी कर सकती हूँ, या ये वाला बहुत सिंपल है, उसमें डायरेक्ट डाल के अगर सी आंसर हुआ तो बिला वजह आप 2 बार वो 30 से कर रहे हो, 31 से कर रहे हो। जो बहुत सिंपल सम्स है ना, उसको आप डायरेक्ट कर लीजिए। ये तो मैं इतना देर से बता बता के कर रही हूँ इसलिए है। तो ये कितना हो गया है, n/2 ट्वाइस ए कितना हो गया 20 प्लस n-1 इंटू डी कितना है मेरे पास -1/3। ठीक है, तो अभी मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, दिस इज इक्वल टू 10n प्लस -n-1/6। ठीक है, 10n इंटू n। ठीक है, अब आप इसमें डाल के देख सकते हैं। ठीक है, यहां तक आने के बाद अगर आप डालेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। दिस इज 10n माइनस n इंटू n-1/6। ठीक है, ये 3 और ये 2, ये हो गया 6, एंड इन द न्यूमरेटर यू हैव n इंटू n-1। तो अगर मैं 30 डालती हूँ तो ये कितना हो जाएगा, फॉर 30 इट विल बी 30 इंटू 10 300 minus 30 into 29 upon 6. So 30 into 29 upon 6, 6 5 है, 29 5 है, कितना होता है 145। तो दिस इज 300 माइनस 145, ये हो गया -300 155। ओके, तो आ गया आपका 9th का आंसर। ओके, डायरेक्ट इस जगह डालेंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया फिर डालेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। मैं जरा चेक कर लूं आंसर। ओके, द nth टर्म ऑफ द सीरीज हुज सम इज, हाँ कनिका यही वाला पूछ रहे थे ना आप? The nth term of the series of sum to n terms is 5. No, no, you are asking some 17th sum, na? अच्छा, this is very easy in the sense you just have to substitute the value for n. ठीक है, तो nth term of the series whose sum to n terms is 5n square plus 2n is, okay, let n be equal to 5। तो इसमें फर्स्ट सीरीज में डाल के देखेंगे 3n minus 10, तो क्या हो जाएगा, n5 तक अगर हम लेते हैं, n5 तक लेते हैं तो मेरा फर्स्ट क्या टर्म होगा -7, सेकेंड टर्म क्या हो गया 2 6 6 minus 10 -4, 3 हो गया 9 minus 10 -1, फोर्थ टर्म हो गया 4 12 मतलब 2, और फिफ्थ टर्म हो गया 15 minus 10 5। ठीक है, दिस इज माइनस +3 +3 +3 +3। ओके, डी यहाँ पे +3 है, इनकी एडिशन कर लें तो कितना आता है, दिस इज -11 -12 12 -12 +7 -5। यहाँ पे मैं n5 डालती हूँ तो 5n स्क्वेयर प्लस 2n कितना आता है मेरा 25, 125 125 प्लस 10, ये हो गया 135। सेकंड क्या है 10n -2। ओके, 10n -2 में क्या हो गया, n1 डाला तो कितना हो गया, ये हो गया 8, 2 डाला तो हो गया 18, 3 डाला तो हो गया 28,
38 or 48. Okay, 1 2 3 4 5. Let me add them up. 8 plus 18 plus 28 plus 38 plus 48 आ गया 140. 8 plus 18 plus 28 plus 38 plus 48 आ गया 140. थर्ड है 10n minus 3. So this is 30 minus 3, 27. नहीं 1, no sorry. 10 minus 3, 7. 20 minus 3, 17. 30 minus 3, 27. Then 37 and 47. इनका कितना आ गया? 7 plus 17 plus 27 plus 37 plus 47. ये आ गया 135, है ना? यही चाहिए था ना, 135. So C will be the answer. Where I did not take 2? Pawan? The 10th one, Shiv, you are asking the 10th one, they have just given. See, the n term of the series whose sum is equal to, so they have given, so we are taking it. Okay, here they have already given to us. यहाँ पे तो हमने किया है ना पवन? 2 कहाँ नहीं लिया? 2 तो लिया है ना यहाँ पे. 1 2 सब ले लिया. 10 3n minus 10 10n minus 2. So आपको 5 तक डिफिकल्ट लगता है तो 3 तक करके देखिए, तो फिर भी आ जाएगा. तो सिर्फ 2 लेके नहीं करना है, क्योंकि बिकॉज हमें उससे आंसर मिलेगा ही ऐसा श्योर नहीं होता है. 3 या 5 ले लोगे तो आपको आसानी हो जाएगी. यू आर 100% श्योर ऑफ द आंसर. तो आप 3 भी लेके कर सकते हैं. ओके, और यू कैन इवन टेक इट विथ 2 ऑल्सो. इतना प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, बट समटाइम्स यू नेवर नो, so it's always better to take a little bigger number. The sum of 3 integers in AP is 15 and the product is 80. Okay, Akshat. So let me take A minus D, A and A plus D. Okay, so what will it be? 3A is equal to 15, है ना? इन तीनों को ऐड करने के बाद 3A is equal to 15, A आ गया 5, है ना? अगर हम फटाफट करेंगे तो आप देखेंगे कि इतना लंबा नहीं है सब. वो एक्सप्लेनेशन देने के लिए हम बड़ा करके लिखते हैं. Product, and the product is, so what is the product? A minus D into A plus D. A minus D into A plus D हमें मालूम है A square minus D square into A is equal to 80. A मुझे मालूम है 5 है, तो A square minus D square is equal to 80 upon 5. ये हो गया 16. अब A square, A कितना है मेरा? 5 है, तो 25 minus D square is equal to 16. So D square कितना हो गया? 25 minus 16, वो हो गया 9. So D हो गया 3. D हो गया 3. अभी यहाँ पे क्या है? D plus or minus 3 है. Please remember it is plus or minus 3. So my numbers A minus D, A plus D will be equal to, ये numbers मेरे क्या क्या आएंगे? 5 minus 3, 5, 5 plus 3. तो ये वाली सीरीज होगी 2, 5, 8. अगर मैं D minus 3 लेती हूं तो 5 minus of minus 3, 5 and 5 minus 3. तो ये हो जाएगा 8, 5, 2. ओके, तो 8, 5, 2, 8, 5, 2 ये D है. 2, 5, 8. तो इसमें क्या हो गया? ये दोनों आंसर्स आ गए हैं, लेकिन आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं. एग्जाम में वो लोग आपको एक ही आंसर राइट होगा इसी तरह से आपको देंगे. ओके,
So, but you must know that you can get plus or minus 3. Okay, yes, 7 did. Kanika, I hope you're still there. The sum of n terms is 3n square plus 5n. The series is. Okay. So here, now let me take n as equal to 3. Let me, so अब मैं थोड़ा छोटा लेके करती हूँ. So 3n square plus, so Sn will be equal to S3, which is equal to 3 into 3 square plus 5 into 3. So 9 3s are 27 plus 15. So answer is 2, 3, 4, 42. 9 3s are 27, 27 plus 15, 40. नहीं 52 होगा ना. एक मिनट मधु, एक मिनट मैं ये इतना कर लूं, मैं आपको ये करती हूँ, अनम्यूट करवाती हूँ. अभी इनका 52 है. ओके, सो n 3 है, सो आई एम गेटिंग दिस एज 52. अभी ये 4 टर्म्स है, तो इनमें से 3 का भी करके देख सकते हैं. ये कितना है? 22 प्लस 20, 42. तो ये नहीं है. दिस इज हाउ मच? दिस ऑलरेडी हैज अ 42, सो ये नहीं हो सकता. उसके बाद how much is this? 22 plus 20, 42. ये मेरा गलत है क्या? It will be only 42. Okay, yes. पहले ही ठीक था. 2 3 4. हाँ, right. Thank you, Kanika. It is 42. Right. तो ये 42 है. तो इसको मैं पहले ऐड करती हूँ. 8, ऑप्शन ए, 8 plus 14 plus 20. So I am adding 8 plus 14 plus 20. ये कितना आता है? 42. तो A is the correct answer. अगर यहाँ 4 है और आपको 4 के साथ कंफर्ट है, तो n is equal to 4 कर लेंगे. n is equal to 4 कर देंगे तो S4 कितना हो जाएगा? 3 into 4 square plus 5 into 4. तो ये हो गया 16. 16 3 कितना हो गया? 16 3 48 प्लस 20 विच इज इक्वल टू 68. तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे नंबर 68 आ रहा है, ये 68 आ रहा है, तो ये दो तो पहले ही कट गए, है ना, क्योंकि 68 एडिशन होने के बाद 68 आना चाहिए. या तो नंबर ही 68 है, तो बचा क्या? ये, इसको ऐड करते हैं. 22, 42 और 26. 42 प्लस 26, ये आ गया 68. ओके, यस. होप यू अंडरस्टूड कनिका. हाँ, जरा मधु को अनम्यूट कर देंगे. हेलो अशोक जी. हाँ, मधु को अनम्यूट कर देंगे. हाँ मधु बोलिए. ओके, आई थिंक हो गए क्या वो अनम्यूट? हाँ, हो गया. हाँ Hello. बोलिए मधु. हाँ. Ma'am, can we have 1 for the value of n where you have put 3 instead of putting 3, can we put there 1 for the value of n? 1. Yeah, Yes, you could do that. See, but what is happening for these two
A and B, you have got 8. Okay, it's the same number. So if you just Okay, put 1, so this is 3 into 1 plus 5 into 1. So you're spending time and not getting anything. So you could do it for n is equal to 2 also. Okay. ma'am. So we can put n for the values of maybe 4 and 3 and 5, whatever there will be the numbers. Yes, the minimum possible so that you can get an answer quicker. Okay. You Okay, can put ma'am. any value, right? So in this Okay, ma'am. case, like you could do it with n equal to 2 also. You could get an answer. Okay, ma'am. Thank you. Yes. Welcome. So the number of numbers between 74 and 2556 divisible by 5 is. Okay, ये वाले बहुत interesting है. I hope, yeah, अभी 10 मिनट है तो हम लोग अच्छे से हो जाएंगे. See, divisible by 5 मतलब पहला नंबर जो है 74 की बात कर, पहला नंबर कौन सा है जो डिविजिबल बाय 5 है, वो हो गया 75, है ना. एकदम सिंपल से करना है. 74 के बाद पहला नंबर क्या है? 75. अभी ये वाला जो लास्ट नंबर है उससे कौन सा नंबर है जो डिविजिबल बाय 5 है? 5 वाले में आसानी हो जाती है कि लास्ट नंबर 5 होगा या 0 होगा तो ही 5 से डिविजिबल है. तो दिस इज नंबर इज 25555, राइट. 25,555. ये ए हो गया, ये आपका एल हो गया. ठीक है, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर. द नंबर ऑफ नंबर्स डिविजिबल बाय 5. डिविजिबल बाय 5 मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस जो हो गया डी, वो कितना हो गया आपका? 5, है ना. 75. उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या होगा? बिकॉज सीरीज क्या हो जाएगी? 78, सॉरी नॉट 78, 75. सीरीज क्या होगी? 75 प्लस 80 प्लस 85, है ना. ऐसे ही होगा ना, तो ही तो कॉमन डिफरेंस 5 आएगा. तो ही हमारे नंबर्स जो हैं वो डिविजिबल बाय 5 होंगे. तो ये वाले अभी वो क्या बोल रहे हैं? ये है. सो टी एन विच इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये मेरे पास ऑलरेडी एन है 25555 इज इक्वल टू ए कितना है मेरा? 75. एन कितना है मालूम नहीं, एन माइनस 1. डी कितना है? 5 है. ठीक है, बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय 5, मेरा 5 है. दिस इज इक्वल टू 255. ये बस यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये -75 तुरंत कर लीजिए, वो बाद में हम भूल जाते हैं. तो उससे अच्छा आप यहीं पे कर लीजिए. तो हाउ मच इज दिस? 2 1 2 3 4 -75 gives me 25480. ठीक है. अभी 5n-1 is equal to 25480. So n-1 is equal to 25480 divided by 5. This is how much divided by 5. ये मतलब आप तुरंत तुरंत कर सकते हैं. 25480 5096. So n will be equal to, ये n-1 is equal to 5096. So n will be equal to this minus sign, 1 is going there. 5096 plus 1, this is equal to 5097. Okay. The pth term of an AP is 3p minus 1 upon 6. The sum of the first n terms of the AP is given by. Okay. So for this, let me find the AP first. So P, if it is 1, then my T1 is how much? 3 minus 1 upon 6, which is equal to 2 by 6, है ना. P अगर 1 है तो 3 into 1 मतलब 3 हो गया, 3 minus 1 हो गया 2 upon 6. T2 मतलब P2 डालेंगे तो क्या होगा? 6 minus 1 upon 6, ये हो गया 5 by 6. T3 is equal to 3 3s are 9 minus 1, 9 minus 1 upon 6, ये हो गया मेरा 8 upon 6. ठीक है, तो मेरी सीरीज क्या है? 2 upon 6, 5 upon 6, 8 upon 6. इसको मैं लिख सकती हूँ 1/6. अगर मैं निकालती हूँ बाहर तो ये हो गया 2 5 8, है ना. इस तरह से मेरी सीरीज जाने वाली है. तो मेरा एन ए कितना है? 2/6.
डी कितना है 5/6 -2/6, वो हो गया 3/6, है ना। उसको मैं दूसरी जगह से भी करूंगी, 8/6 -5/6 इज ऑल्सो इक्वल टू 3/6। मेरे पास ए है, मेरे पास डी है, सो एस एन sum of the first n terms is equal to n/2 twice a plus n-1 into d, right? ये मेरा फॉर्मूला है, तो मेरा एस एन कितना हुआ n/2 ट्वाइस ए कितना है मेरा 2/6, 2 इंटू 2/6 प्लस n-1 n-1 इंटू डी कितना है मेरा 3/6, ठीक है। सो एस एन, ये मैं 6 दोनों में कॉमन है तो उसको बाहर निकालती हूँ, n/12, ये 6 और ये 6 दोनों टर्म्स में 6 है, तो 2 इंटू 6 तो हो गया 12। ऊपर क्या बचा 4 प्लस 3 इंटू n इज 3n, 3 into -1 is -3. So this is equal to n/12 3n plus 4 minus 3 -1. So Sn is equal to n/12 3n minus 1. है क्या n/12 3n minus 1. सी है क्या आंसर इसका? ठीक है, ओ प्लस हो गया ना, सॉरी सर, 4 + 1 है ना, ये नहीं, B will be the answer. B, because this is 4 plus 4 minus 1 plus 1 plus 4 minus plus 4 minus 3 is plus 1, so 3n plus 1 upon 12, n into 3n plus 1 upon 12, so B will be the correct answer. देखो मेरे से ही गलती हो रही है साइन में, 4 minus 3 is plus 1, so n upon 12 3n plus 1 upon 12. Okay, so these are the very interesting sums that you should know. ये वाला किया हुआ है 3377. Okay, the first term of an AP is 14 and the sum of the first 5 terms and the first 10 terms are equal in magnitude but opposite in sign. Okay, so first term मतलब A दिया हुआ है 14, sum of the first 5 terms, so S5 which is equal to 5/2 28, 2 into 14 is 28 plus 4D, है ना, n-1, so 5 minus 1 is 4 into D. S10 कितना होगा 10/2, 28 तो वैसे ही रहेगा 2A plus 9D, है ना। अब ये क्या बोल रहे हैं, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ऑपोजिट इन साइन, सो 5/2 28 plus 4D is equal to -10/2 28 plus 9D. ये 2 है ना, वो कैंसिल कर देंगे, 5 1 जा 5 2 जा, तो ये क्या हो गया 28 plus 4D is equal to -2 into 28 कितना हो गया -56, 2 into 9 हो गया -18D. Okay, so I am getting 22D, ये -18 इधर लाए तो 22D is equal to -56 -28, ये कितना हो गया 56 plus 28 84 -84, so D is equal to -84 upon 22, 2 11s are 2 42s are, so D is -42 upon 11,
तो what are they asking you for the third term? T3 is equal to 14 plus 2D. 14 plus 2 into minus 42 upon 11, which is equal to 14 plus 42 into 2, 84, with a minus sign. Minus 84 upon 11. 14 into 11 is 154 minus 84, 70 upon 11. This is equal to 6, 4 by 11. A है इसका आंसर 22nd. Yes. Okay, so A will be the answer. अभी 23rd. The sum of certain numbers of the term is 52. अभी यहाँ 52 है ना, 52 कौन किसके टेबल में आता है? 12 के, 13 के, 11 के, 13 के टेबल में आता है ना. तो हम ट्राई करेंगे उसको देख के. 13 4 जा 52 होता है ना, 13 4 जा 52. हाँ, तो let us see. The sum of certain terms of the AP is 52. The number of terms is. तो ये कितना है? A is equal to how much? -8. D is equal to how much? -6 minus of -8. तो ये हो गया +2, which is also equal to -4 minus of -6, which is equal to +2. अभी मैं S13 करके देखती हूँ. S13. So this is equal to 13 upon 2 twice A, मतलब -16 plus n-1, मतलब 12 into D कितना है मेरा? 2 है. So 13 upon 2 minus 16, this is how much? Plus 24. Minus 16 plus 24 is 8. So 13 upon 2 into 8, 2 1s are, 2 4s are, ये हो गया 52. So B is the correct answer. तो कभी कभी देख के भी हमें अंदाजा आ जाएगा कि हमें क्या करना है. ओके, ये शायद हम लोग लास्ट वाला ये कर लेंगे, फिर देख लेंगे. The first and the last terms of the AP are the sum is this. So this is very good. Sn is equal to n by 2 a plus n, है ना. फर्स्ट टर्म दिया है, लास्ट टर्म दिया है, तो n मालूम नहीं है. ये दिया है 7171 n by 2, and this is -4 plus 146. ये कितना हो गया? 142 हो गया. So n is equal to 7171 upon 2 into 2 upon 142. So this is 7171 into 2 divided by 142. Answer is 101. So A will be the answer. ये वाला हमने किया हुआ है. What you have to do, I will quickly tell you the remaining. This is R in AP, the value of x will be x minus 10, x plus 10, sorry, x plus 10 minus 2x is equal to 3x plus 2 minus x minus 10, है ना. इनको सॉल्व करिएगा. 3 नंबर्स आर इन एपी. ये वाला हम जब जीपी करेंगे तब करेंगे. ये वाला वैसे ही है. ओके. The sum of all odd numbers between 200 and 300 is. यहाँ पे पहला ऑड नंबर क्या होगा? 201, फिर हो जाएगा 203 और लास्ट क्या हो जाएगा? 299. ठीक है, तो इसको हमको ऐड करना है. तो हम इसमें ए कितना है मेरा? 201. डी कितना है? 2. इस तरह से करके हमें ऐड करना है.
I'll try to take them next time, these sums. There are quite a few sums, so I'll try to cover it in the next time. Yes. Okay. We already run out of time. I hope you enjoyed the session, and thank you all for your wonderful patience, and have a great weekend ahead. Thank you so much. Yes.